Does an Indian consumer not give importance to its oral care? Currently, yes, 90 to 95% of people are not giving oral care that much importance. How do celebrities have such shining, attractive teeth? What do they do differently? देखो उनके वो असली दांत नहीं है. Oral care in general is very boring category. If you see data, India ka oral health is very poor. We are in bottom 5 in terms of oral health. 85 to 90% of Indians have either cavity or some sort of gum issues. For this design, we have already won 2 design awards. One is India's Best Design Award and one is German Design Award, which is A Design Award. What are the biggest opportunities you see in India? India's oral care market growth, electric toothbrush as a category is growing the fastest as of now. So that is a really interesting category and that's what we are gunning for. Welcome to our podcast Level Up with Nikunj Choudhari, co-founder of Tusk. Nikunj shares how he set out to reinvent the everyday toothbrush product by blending smart design and technology, making oral care enjoyable and effective for Indian consumers. We discuss the opportunities in India's growing oral care market, how Tusk is scaling its product line, and the unique challenges of building a consumer brand from scratch. Nikunj also reveals key trends in health and wellness, the role of technology in driving better habits, and what it takes to compete with bigger giants, funded players in the D2C space. Let's dive into this episode. Welcome, Nikunj, to Level Up Podcast Season 3. Today is the last day of shoot. So happy to have you here, having worked with you, spoken with you, having so many conversations with you over the last couple of months, also raising capital for you. It is nice to have one of our portfolio founders on Level Up, and this is going to be really exciting because this category is very exciting. So I want to be, I want to make sure that we can really remove a lot of good understanding of this category from this episode, right? So let's dive into it. First question is, most people don't really spend time thinking about their brushes or about their toothbrushes, right? What made you obsess over reinventing such an everyday product? Yeah, so it started with my personal problem. I was in USA promoting another product for the company that I was working for. That's when I had my first cavity. And the treatment there was so expensive in the US that return flight was cheaper. So for one whole week, I was on heavy doses of painkillers. And that's when attention to oral care went. When I used to travel there, we usually used to stay in Airbnbs, hostels, etc. What I observed there was most of the people there are already using products like electric toothbrushes, water flossers, etc. And that trend was not yet in India. So we thought there is an opportunity in this sector and we can do something about it. Okay, got it. But again, that is a very interesting category that you are talking about. But why? I mean, it is a category which is a very mass category. People buy 20 rupees, 50 rupees, 40 rupees brushes. Yes. What made you get into electric as a category, which is little bit more premium also? Yeah. What made you think that this would sell in India? Yeah, so oral care in general is very boring category. No one thinks about it, right? जब तक दांत में दर्द नहीं होता है या डेंटिस्ट के पास नहीं जाना पड़ रहा है तब तक कोई सोच नहीं रहा है बट जब होता है तब रियलाइज़ होता है हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ इफ़ यू सी डेटा इंडिया का ओरल हेल्थ इज़ वेरी पुअर वी आर इन बॉटम 5 इन टर्म्स ऑफ ओरल हेल्थ 85 to 90% of Indians have either cavity or some sort of gum issues. And ये शुरू मतलब किसके वजह से होता है mainly because the type of food that we consume. The food that we have is very sugary, very sticky, and oral health पे या oral care पे नहीं ध्यान देते कोई 2 बार ब्रश नहीं करता है and that's why this is the issue.
एंड इफ़ यू सी सिर्फ ब्रशिंग से 90% ऑफ द कैविटीज़ या कोई भी इशू अवॉइड हो सकता है. द डिफरेंस इज मैनुअल टूथब्रश एंड्स तक अच्छे से जा नहीं पाता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा कैविटीज़ होती है इन जनरल. इलेक्ट्रिक टूथब्रश इज 10 times more efficient as compared to a manual toothbrush in cleaning. So as humans we want to become more efficient day by day. Electric toothbrush is one product that makes brushing more efficient. तो वहाँ पे वो डेल्टा है. एंड जैसे इंडिया में अभी पर्सनल केयर का बहुत बड़ा वेव आ रहा है. नो वन यूज टू थिंक अबाउट स्किन केयर रूटीन्स, हेयर केयर रूटीन्स, एंड ओरल केयर इज पार्ट ऑफ दैट पर्सनल केयर. एंड वी फील कि इसमें भी प्रीमियमाइजेशन आएगा. एंड दैट्स वेयर हमारा जो एक्सपर्टीज था एज इंजीनियर्स, द प्रोडक्ट्स दैट वी कैन डेवलप मोर इनटू इलेक्ट्रॉनिक्स, जो सिंपल है उसको और एफिशिएंट कैसे बनाए, वो मैच हो रहा था. सो वी थॉट कि इलेक्ट्रिक टूथब्रश एज अ कैटेगरी इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कैटेगरी टू वर्क ऑन. यू राइटली मेंशन्ड कि पर्सनल केयर इज़ एक तो बहुत ब्रॉड कैटेगरी है. पर्सनल केयर के अंदर आपका फेशियल, ब्यूटी, वेलनेस, your makeup stuff, your hair, जैसे बियर्डो वगैरह है, तो आपके जो भी हेयर वाले चीज़ है, for men's also and for women also there would be hair care. There are so many hair care products, right? Yes. I think वो वाला wave which is skin care also, what I'm saying more prominently, skin care has come. Hair care has come, and that is something which has already grown to a decent level. Yes. Where there have been acquisitions, exits, etc. that has happened. Correct. But oral care is something which is missing. Correct. जो अब तक wave आया नहीं और brand कोई बड़ा brand नहीं बना, कोई premiumization as you rightly mentioned, that play has not happened yet. So I think it's a very good category, and I also genuinely find this gap, और जो अभी शायद से अगले 5 साल में ये build होगा in the personal care segment. Tell me that Tusk, blends technology and design to make oral care enjoyable, right? How do you approach product design to meet the needs of Indian consumers? Yeah, so I and Atul are very passionate about products. Yeah, so we just love building products. In oral care, because it is a boring category, what we wanted to do is create products specific to Indian audiences जो उनकी लाइफ और कन्वीनियंट बनाए. वी वर फोकसिंग मोर ऑन द एक्सपीरियंस दैन ओनली द क्लीनिंग. मतलब क्लीनिंग तो ऑलमोस्ट all the brands are promising. Oral-B, Philips, Colgate, everyone will promise that cleaning होगा. But what we are more focused on, जो वो लोग नहीं focus कर रहे हैं. जैसे if you see their products, it is more medical device like. They are bulky, they are noisy. So we wanted to challenge that and create products. And those products go also from a dentist angle, ना? Yes. जो ads में भी आते हैं, and toothache हो रहा है, वो हो रहा है, cavity है, तो their marketing positioning is also dentist. Yes, तो जैसे स्किन केयर में भी जैसे कोई भी सिरम्स या कुछ भी पहले यूज़ करते थे, इट वाज डॉक्टर रिकमेंडेड, बट अभी उसको एक लाइफस्टाइल बना दिया गया है. दैट्स व्हेन उसका अडॉप्शन इतने बड़े लेवल पे हो रहा है. यस, तो दैट्स व्हाट वी आर आल्सो ट्राइंग टू डू इन ओरल केयर. टूथब्रश खरीदने के लिए डेंटिस्ट का मतलब कि ओपिनियन नहीं चाहिए कि कौन से टाइप का टूथब्रश खरीदना चाहिए. They advise more on the brushing techniques and the habits that you need to follow. So what we are making is कि वो habits follow करना ज़्यादा easy और convenient कैसे कर सकते हैं in a lifestyle experience. That's what we are targeting. Hi everyone, a quick shout out to our amazing sponsors and partners who make this show Level Up possible. First off, No Filter Juice, which is your daily dose of pure, unfiltered goodness with 100% real fruit juice, zero added sugar, no preservatives, and no artificial concentrates. Every sip is packed with authentic flavor and nutrients. Plus, it's served in eco-friendly glass bottles. Good for you and good for the planet. Starting at just ₹159. No Filter is the healthiest way to fuel your day. Click on this link below to purchase your bottle now. Our second sponsor is Titus Footwear. It is a brand built on legacy, quality, and innovation. From sturdy work boots to stylish sandals and cozy slippers, Titus has something for everyone in the family.
Especially if you are a child going to school, this is a brand known for its footwear for school children. Affordable, durable, and always in style. Titus lets you walk with confidence starting at just rupees 299. Click on the link below to purchase your shoes now. I would like to thank our growth partner Growth OS and our venue partner Let's Work. I think we can, if you can show the brushes also, and explain कि वो features क्या है. I think there are some wonderful features. If you can put that across and show. Yeah, sure. So if you see most of the electric toothbrushes, they are very bulky and noisy. And jo are slimmer versions, they are not effective at all. The brush heads do not vibrate. So what we have done is the form factor is very slim and sleek. तो इट इज़ क्लोजर टू अ मैनुअल टूथब्रश. तो किसी को भी अगर स्विच करना है फ्रॉम अ मैनुअल टू इलेक्ट्रिक और इवन एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक टूथब्रश टू आर वर्जन, तो वो बहुत ही सीमलेस होना चाहिए. सो इफ़ यू सी द फॉर्म इज़ वेरी स्लीक. इट हैज़ 3 ब्रशिंग मोड्स, क्योंकि सबका ब्रशिंग हैबिट्स डिफरेंट होता है. वन इज़ फॉर डेली क्लीनिंग, वन इज़ जिनको सेंसिटिव गम्स होते हैं या सेंसिटिव टीथ होते हैं, जिनको माइल्ड ब्रशिंग पसंद है, उसके लिए एक सेकेंड मोड है. और थर्ड इट इज़ फॉर द Zen mode, which is gum cleaning, जो आपके gums को मसाज करके clean करता है. And the best part about this brush is it has this color changing brush heads. तो आपको exactly पता चलता है कि आपको brush head change कब करना है, क्योंकि इंडिया में लोगों को पता ही नहीं है. जब तक वो पूरा एकदम flower नहीं बन जाता तब तक कोई change ही नहीं करता है. Correct. And another thing that what we observed is कि हम लोग इसको रखते कैसे हैं इन वॉशरूम्स. इफ़ यू सी एक मग में बहुत सारे ब्रशेस पड़े हुए हैं, उसमें स्किन केयर का भी सामान है, रेज़र भी है. एवरी थिंग इज़ टचिंग ईच अदर विच इज़ वेरी अनहाइजीनिक. सो उसको सॉल्व करने के लिए वी क्रिएटेड अ मैग्नेटिक वॉल माउंट. तो आप बाथरूम पे एक अपना मैग्नेटिक वॉल माउंट स्टिक कर सकते हो एंड इट मैग्नेटिकली जस्ट माउंट्स देयर. So it will not get, it will, even if it is little wet, Yeah. it won't really touch the other products, the Correct, other correct. personal care products. एंड एक और इशू था कि चार्जिंग बार बार करना पड़ता था. Important. Yeah, so we created like a C-type charging dock. तो आपके फ़ोन के चार्जर से आप चार्ज कर सकते हो एंड सिंगल चार्ज इट गिव्स यू 40 days ऑफ बैटरी लाइफ, विच इज़ इनसेन. Very good. I think this is, Yeah. something And- which is very unique. Yeah, please go ahead. Yes, and for this design we have already won 2 design awards. One is India's Best Design Award and one is German Design Award, which is a design award. So we are very proud to be the an design, yes. to be an Indian company who is representing on global stage, known for its design, क्योंकि usually Italians are known for their design and Germans are known for their engineering. So yeah, we are really proud about that. Wonderful. That's really nice. How do you plan to scale your product line while maintaining a focus on user experience and simplicity? Yes. So currently we have 2 products, which is electric toothbrush and toothpaste. But what we are targeting is we want to be a one-stop oral care solution for all your needs. So there are categories that we are going to enter soon. We are making more variations of toothpaste. We are also working really hard on the kids range, which is our next range, which we are very excited about. क्योंकि for kids it is not a toothbrush, it is more like a toy. एंड पेरेंट्स के लिए वो बहुत कन्वीनियंट हो जाता है कि उनका बच्चा ब्रश कर रहा है, बिकॉज उनको ब्रश करवाना एक बहुत बड़ा टास्क पड़ता है उनके लिए एवरी मॉर्निंग. सो दैट इज़ समथिंग दैट वी रियली नीड टू सॉल्व फॉर. अगर आप यूएस एंड यूरोप में देखो, अराउंड 50-60% पीपल आर ऑलरेडी यूजिंग इलेक्ट्रिक टूथब्रशेस. एंड वहाँ पे भी जो अडॉप्शन हुआ था, it was led by Gen Zs, millennials and the kids section. So that is the trend that we are also observing in India as well. Makes sense. The oral care market in India is growing, but of course it is at a nascent stage compared to global markets, right? What are the biggest opportunities you see in India? In India, in oral care section, yeah, so specifically if you see India's oral care market growth,
Electric toothbrush as a category is growing the fastest as of now. So that is a really interesting category, and that's what we are gunning for. Apart from that, there are more micro categories within the oral care which are premiumizing the current categories. For example, there are people working in whitening section. There are natural variants of each and every product like toothpaste, mouthwash. That is what consumers are shifting towards because they are getting more aware about the ingredients that goes into the toothpaste or mouthwash. And that is what we are seeing a shift. So there are two things. One, Colgate is also Colgate, Oral-B, the bigger brands are also trying to penetrate more in terms of switching people from using a tooth powder to a toothpaste. That is one thing that they are working they on. are doing, yeah. And the new age brands like us, we are focusing on people who have already adopted or are educated about this category and are now shifting towards better for them products, just like in the skincare industry. So what Bombay Shaving Company did for the shaving category, what Mokobara did for the luggage category, that is what we are trying to do for the oral care category. Wonderful, wonderful. Uh, how do consumer preferences, for oral care products differ between India and more mature markets like the US or Europe? Yeah. So the biggest difference is there, any kind of medical expense or dentist expense is very, very high. So they are very, very aware and very, very cautious about their oral care. In India, it is not there. Matlab, it is blatantly not there at all. So that is a very big mindset difference between a European and US consumer versus an Indian consumer. So does an Indian consumer, you know, not give importance to its oral care? Currently, yes, 90 to 95% of people are not giving oral care that much importance क्योंकि उनके लिए वैसा है कि जब तक मेरे को दर्द नहीं हो रहा है या डेंटिस्ट के पास जाने की बारी नहीं आ रही है तब तक तो मैं नहीं ही सोच रहा हूँ किसी में. डू यू रिमेंबर लास्ट व्हेन यू थॉट अबाउट योर टूथब्रश कि मेरे को सोचना चाहिए कि कौन सा टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए या कौन सा ब्रश यूज़ करना चाहिए? नो राइट. तो वो माइंडसेट अभी तक इंडिया में आया ही नहीं है. बट दैट इज़ समथिंग विल चेंज एंड उसके लिए डेंटिस्ट विल प्ले अ ह्यूज रोल. जैसे स्किन केयर और वहाँ पे भी आपने देखा अ लॉट ऑफ पीपल वेर क्रिएटिंग कॉन्टेंट अराउंड इट, नॉट जस्ट इन्फ्लुएंसर्स बट डॉक्टर्स कि कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए, क्यों यूज़ करने चाहिए एंड एडुकेटिंग देम मोर अबाउट द स्किन और हेयर. वैसे ही ओरल केयर में डेंटिस्ट आर नाउ बिकमिंग क्रिएटर्स एंड एडुकेट. यस, मतलब अभी नए नए आ रहे हैं एंड दे आर एडुकेटिंग पीपल कि ओरल केयर पे क्यों ध्यान देना चाहिए, टूथब्रश चूज़ करते वक्त क्या क्या यूज़ मतलब क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, टूथपेस्ट यूज़ करते वक्त क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए एंड क्या रूटीन्स होने चाहिए ओरल केयर पे. क्योंकि टीथ इज़ द ओनली पार्ट इन योर टीथ जो मतलब कि एक बार डैमेज हो गया तो इट कांट बी अंडू नहीं कर सकते. सो एक बार दांत गया तो गया. गया. तो ध्यान रखना बहुत चाहिए important है. चाहिए हाँ. वरना फिर 70s और 80s में दांत ही नहीं बचेंगे. Very interesting. ये बात, I think you've said a very good point that if dentist or the doctor community, they do not educate people, as maybe on LinkedIn, on whatever, on social media channels and through their personal consultations, etc. At a mass level, the adoption will become very difficult. Yes. And what has happened till now is that the legacy brands like Colgate, Oral-B, these guys have positioned their products as a dental product. कि toothache हो रहा है तो अच्छा आप ये product लो. Even if you see the new Oral-B ad, that is completely a dentist driven ad. The positioning is only such कि आप अभी मतलब मेरा manual brush छोड़ दो और आप electric toothbrush लो. So it is bypassing their original product only, which I don't know, it does not make that much sense. But I believe that a lot of things will also happen as a lifestyle. जैसा हमने भी बात किया Mokobara did with the luggage industry, और
which other brand you said? Bombay Shaving Company. Bombay Shaving Company did with the shaving Yeah. industry, right? तो I think ये चीज़ oral care में होगा, which is now becoming a lifestyle and a better for me product, Correct. Yes. right? जहाँ पे आप बच्चों का रेंज भी लेके आ रहे हो, कपल का एज अ पेरेंट्स का एक रेंज है. So how there are 3 suitcases, 3 luggage bags for travel for a family, Yes. for a kid, for the wife and for the husband. अलग अलग वो डिज़ाइंस एंड वो साइज में है. वैसा आई थिंक सेम थिंग इसके अंदर भी हो सकता है, एंड विद द एस्थेटिक्स, विद द लुक, विद द फील एक्सेट्रा. Of course. Yes. That is something which is bound to happen. Correct. Absolutely. Yes. Got it. Are there any plans to take Tusk's product offerings international, global, and what markets do you eye for that? Yes. So this Jan we got a chance to be at CES 2025 in Las Vegas, which is the biggest consumer electronics show in the world. So we were sponsored by Motwani Jadeja Foundation to actually be there and represent India Pavilion. So we were one of the 10 startups there. That's when we showcased the second version at at CES 2025. So what we are trying to do is, in USA the market is already very mature, people are educated, but they have other issues. For example, the electric toothbrushes that they are using, it comes with a dock charger, and in a family of 2 or 4 docks are lying around in the bathroom, and the toothpaste flows down from the brush to the dock, so it becomes very very dirty, and the battery life is also very poor. So that is what we are going to change. So the second product that we are launching, it comes with the wall mount, but it acts as a wireless charger. Yeah. So in single charge it gives you 100 days of battery life. तो मतलब साल में 2 या 3 बार ही तुमको चार्ज करना है. And it comes with a UVC travel cap also. So what happens is UVC light disinfects your toothbrush while you are traveling. So जो bacteria buildup वगैरह होता है वो उसको clean up करता है. So it keeps your brush head hygienic and fresh whenever you want to use. So this is the product that we showcased during this CES, and we got amazing response क्योंकि वहाँ पे जो भी consumers आए थे, most उन्होंने of use them किया हुआ है. are using electric Excess, toothbrushes, correct. and they were facing these problems. So they were very very excited about it, and they also registered for pre-sign up, pre-order. So we are soon going to launch this month on Kickstarter, which will be targeting towards US and the global market, but primarily most of the consumer base is going to be from US during this launch. Okay, got it. What are some consumption trends in India that startups in a consumer tech industry should pay attention to? Consumption trends. Yeah. So one very major trend that we have observed is people are becoming more individualistic in terms of buying. For example, पहले जो भी बाइंग होती थी इन टर्म्स ऑफ पर्सनल केयर और कोई भी प्रोडक्ट्स, इट यूज टू हैपन बाय अ मदर इन अ फैमिली, जो पूरे फैमिली के लिए लेके आ रही है. फॉर एग्जांपल बात बेदिंग का सामान चाहिए तो वो पूरा एक ही सोप आ रहा है, फेस वॉश या बाकी जो भी प्रोडक्ट्स है. बट अभी आप देखोगे तो एवरीवन इज़ मेकिंग देयर इंडिविजुअल चॉइसेस. तो जैसे मेरा साबुन, मेरा शैम्पू, मेरा फेस वॉश इज़ डिफरेंट फ्रॉम वॉट एवर माई father is using right now, but it used to be same 10-20 years ago. So that is something which is very interesting कि लोग अभी खुद के लिए buy कर रहे हैं. So that's when new age brands can actually create a position and target these new age consumers जो अभी अभी जैसे जिनका job शुरू हो रहा है, और people who have just shifted from their hometown for their college to different city, and they are buying these personal care products for themselves, and they are more aware than anyone else क्योंकि वो इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है. खुद रिसर्च करते हैं, खुद अवेयर मतलब इन्फॉर्मेशन लेते हैं, they talk to people etc. But everything is being done by themselves. So that's a very interesting trend. हाँ, वो खुद के decisions खुद बना रहे हैं in terms of So consumption. as a startup, Yeah. as a new startup, right, in a consumer tech
industry, with keeping in this point in mind that okay, every person is getting more individualistic in terms of decision making and choices. Yes. Okay, what is a kind of a sector or industry that a startup founder can focus on, keeping this trend in mind? Okay, so very interesting. Recently, Sequoia Capital had a meeting, and they called 150 of their top startup founders. Yeah, so they were discussing कि अभी next क्या trend आएगा, मतलब consumption कहाँ पे जा रहा है, कहाँ पे तुमको लगता है कि इंडिया में ये इंडिया इन में जनरल ग्लोबली कि okay. कहाँ पे ज़्यादा मतलब कि कंजम्पशन आएगा या व्हाट विल डिसरप्ट द मार्केट्स. सो आफ्टर दैट मीटिंग दे केम टू अ कंक्लूजन कि एनीथिंग टू डू विथ एआई इन प्रोडक्ट और सर्विस. फॉर एग्जांपल कोई भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट या सर्विस है, तुम एआई से अगर उसको और एफिशिएंट बना पा रहे हो देन दैट विल डू वेल. सो दैट इज़ समथिंग दैट दे हैव आइडेंटिफाइड एंड आई फील कि यस, जैसे फॉर एग्जांपल ओरल केयर में ही देख ले, तो व्हाट वी वर ऑल्सो डिस्कसिंग कि अगर ऐसा टूथब्रश हो जो डिटेक्ट कर सकता है कि तुम्हारे कैविटीज़ कहाँ पे हो रही है, या जो टूथपेस्ट तुम यूज़ कर रहे हो उससे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है तुम्हारे टीथ पे, इज़ इट गुड फॉर यू और बैड फॉर यू, ये सब चीज़ें अगर घर पे ही होने लगी तो कितना अच्छा होगा फॉर अ कंज्यूमर, क्योंकि उनको पहले ही पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है विद So you देयर mean to ओरल say हेल्थ. by putting a toothbrush in your mouth Yeah. while brushing, या if there is some sensor or something like that which can identify all this stuff, और जो डेटा ऐप पे या वो सब चीज़ पे आपको दिखेगा, करेक्ट करेक्ट जैसे यू आर वेयरिंग स्मार्ट वॉचेस, सो एवरीथिंग अबाउट योर स्लीप एंड योर स्टफ, हार्ट बीट और ये सब चीज़ आपका आ जाता है बिकॉज वो पल्स को पकड़ लेता है. करेक्ट. So out here it can do a similar thing on a teeth. हाँ, and in general India is moving towards fit India. So जो भी will any type of product or service जो किसी को भी हेल्प कर सकता है टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ themselves, मोर फिटर, मोर हेल्दियर एंड मोर हैप्पियर, तो दैट विल वर्क. तो उस लाइन्स पे इज़ व्हाट न्यू फाउंडर शुड थिंक अबाउट. Interesting. Interesting. How is Tusk leveraging technology to bridge gaps in oral health awareness and habits? या सो अभी के लिए वी डोंट हैव वेरी एडवांस टेक प्रोडक्ट्स इन ओरल केयर. व्हाट वी आर डूइंग इज इंडिया में ऑलरेडी ये कैटेगरी में एडुकेशन बहुत है टू कन्वर्ट फ्रॉम अ मैनुअल टूथब्रश यूज़र टू एन इलेक्ट्रिक टूथब्रश. सो द टेक दैट वी आर यूजिंग इज टू मेक these products more user friendly. So it is more internal right now, but yes, in future the kids version that we are thinking of and other product variants, उसमें हम लोग देख रहे हैं कि और टेक्नोलॉजी को कैसे लेवरेज कर सकते हैं टू क्रिएट अ डिफरेंशिएशन एंड इट ऑल्सो एड्स अ लॉट ऑफ वैल्यू फॉर द कंज्यूमर इटसेल्फ. फॉर एग्जाम्पल एक हम लोग ऐसे ही रैंडमली टेस्ट कर रहे थे, वी क्रिएटेड अ टूथब्रश विथ म्यूज़िक इन इट फॉर किड्स. तो जब तक वो म्यूज़िक बज रहा है बच्चे को ब्रश करना है. सो आई गिव इट टू माई नेफ्यू एंड उसको इतना मज़ा आया कि वो फिर नीचे जाके अपने जो भी फ्रेंड सर्कल है उधर जाके वो ब्रैग कर रहा है कि मैंने ऐसा वाला टूथब्रश लिया. एंड नेक्स्ट डे उनके पेरेंट्स के हमको कॉल आ रहे हैं कि ये वाला प्रोडक्ट हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए. फिर हम लोग को बोलना पड़ा ये बस टेस्टिंग हम लोग कर रहे थे, ये प्रोडक्ट है नहीं अभी मार्केट में. सो दीज आर दी थिंग्स दैट वी आर ट्राइंग आउट कि हम लोग ये बोरिंग कैटेगरी को और इंटरेस्टिंग और एन्जॉयबल कैसे बना पाए. Lifestyle product एक बनाने का है, which is enjoyable, which is fun, and I think even with the current look and feel, it is very vibrant product. It gives a very vibrant energy to the bathroom in general. हाँ करेंट, वो मेडिकल डिवाइस लाइक नहीं लगेगा, बोरिंग नहीं लगेगा, आपके बाथरूम में होगा तो भी वो मतलब और कि वो बहुत अच्छा शाइन दिखे. करके आता है Yes, किसी को भी, yes. मतलब if anyone enters the bathroom, this will be a little differentiated product. This I myself have experienced that, right? If there was an instance, a guest had come and she was using the washroom, तो वहाँ पे ये ब्रश था और मतलब वो सबसे ज़्यादा उठ के आया कि भाई ये क्या नया चीज़ है, यू नो, विदाउट नोटिसिंग एनीथिंग एल्स ये प्रोडक्ट नोटिस हुआ. And I think that's what matters when you are, even when you're traveling.
ये एक travel friendly product है. So I Correct. feel that also adds it makes it little more travel friendly for for families, for couples, etc. यस इन जनरल मतलब ये जो बाथरूम प्रोडक्ट्स होते हैं उसके अराउंड डिस्कशंस बहुत कम होते कम हैं होते हैं, yeah. एंड उस पर डिस्कशंस कराना बहुत डिफिकल्ट टास्क है बट यस दीज आर द फ्यू थिंग्स जिस पे थोड़ा बहुत डिस्कशन हो पाता है बिकॉज अगर आप किसी के बाथरूम में जा रहे हो और टूथब्रश वहाँ पे एकदम ऐसे हवा में खड़ा Wall है mounted खड़ा यस है. वॉल माउंटेड है तो फिर तुम लोग जाके पूछोगे कि ये क्या है Correct. कहाँ से लिया वगैरह सो यस Correct. Yeah, I agree. How do you balance affordability with premium features in your product? Yes. So, what we are trying to do is not build a very premium brand. We are into mass premium more. तो जो भी फीचर्स है जो भी फीचर्स है जो ज़्यादा एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिक टूथब्रशेस या प्रोडक्ट्स में आते हैं हाउ वी कैन गिव दैट एंड इवन मोर एट अ लोअर कॉस्ट इज़ वॉट वी आर ट्राइंग टू डू एंड वो शुरू होता है फ्रॉम द डिज़ाइन इटसेल्फ बिकॉज वी आर मेकिंग इट फ्रॉम स्क्रैच हमको एग्जैक्टली पता है वो क्या करने से उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कम से कम रहेगा एंड फिर कंज्यूमर को भी एक बहुत अच्छे प्राइस पे एक वैल्यू प्रोडक्ट दे सकते हैं सो दैट्स व्हाट आई एंड अतुल हैव एक्सपर्टीज इन एंड वो हम लोग लेवरेज करते हैं इन एवरी प्रोडक्ट दैट वी क्रिएट Hi everyone, a quick shout out to our amazing sponsors and partners who make this show Level Up possible. First off, No Filter Juice, which is your daily dose of pure, unfiltered goodness with 100% real fruit juice, zero added sugar, no preservatives, and no artificial concentrates. Every sip is packed with authentic flavor and nutrients. Plus, it's served in a eco-friendly glass bottles. Good for you and good for the planet, starting at just rupees 159. No Filter is the healthiest way to fuel your day. Click on this link below to purchase your bottle now. Our second sponsor is Titus Footwear. It is a brand built on legacy, quality, and innovation. From sturdy work boots to stylish sandals and cozy slippers, Titus has something for everyone in the family. Especially if you are a child going to school, this is a brand known for its footwear for school children. Affordable, durable, and always in style. Titus lets you walk with confidence starting at just rupees 299. Click on the link below to purchase your shoes now. I would like to thank our growth partner Growth OS and our venue partner Let's Work. Got it. But अपना मतलब currently I think the price is around 1400 bucks, right? What is the strategy to get it down to a level? Maybe not a mass level like a 200-300 bucks. Yes. But what is the plan or the strategy to get it to a level where it becomes affordable premium? It becomes affordable premium के अच्छा मतलब more people can buy it. कोई बंदा जिसका budget 1000 का है, he has really liked it, but he is having to skip it for now because his budget is only 1000. Correct. How do we get it to that level where people don't think twice कि मैं खरीदूं कि ना खरीदूं? हाँ so in India for this specific category electric toothbrush में 3 different tiers है one is below 1000 rupees one is 1000 to 2000 and third is 2000 and above तो 2000 and above is super premium super Correct. niche Luxury, yeah. yes and 1000 के नीचे प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ पे पूरा प्राइस वॉर चल रहा है all the brands that are there are competing on the price and as a new age startup we can't compete on price वहाँ पे हम लोग जाएंगे तो we will get killed पिट जाएंगे, हाँ. yes so that's why हमारा strategic decision था कि हम लोग 1000 to 1500 वाले रेंज में रहेंगे which is not super premium also but mass premium sector में आता है and क्वालिटी पे ज़्यादा हम लोग फोकस करेंगे ऑफ कोर्स ब्रिंगिंग दिस प्राइस डाउन इज़ पॉसिबल हम लोग सेकेंड वेरिएंट्स वगैरह भी बना सकते हैं विच कैन बी लिटिल टीयर डाउन वर्जन्स जो सस्ते बनेंगे बट वहाँ पे वी डोंट वांट टू गो बिकॉज दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट मार्केट क्योंकि अगेन हम लोग वापस प्राइस वॉर पे ही आ जाते हैं उसमें सो दैट इज़ नॉट समथिंग दैट वी वांट टू डू स्ट्रैटेजिकली एज अ कंपनी Correct. At least for the next 2 to 3 years. Correct. Got it.
How do you see the consumer oral market evolving in India over the next 5 years, and how is Tusk positioning itself for that future? इन इंडिया व्हाट आई फील इज़ नेक्स्ट 5 से 10 साल में जैसे स्किन केयर रूटीन्स हेयर केयर रूटीन्स है वैसे ओरल केयर रूटीन्स भी आ जाएंगे 3 स्टेप. अभी सिर्फ ब्रश करते हैं, ब्रश, टंग क्लीनिंग, माउथ वॉश, देन देर इज़ रिंस, ऑयल पुलिंग, ये सब कुछ अभी यहाँ पे नहीं हो रहा है. बट आप यूएस में देखोगे ये सब रूटीन्स है एंड इसलिए उनकी ओरल हेल्थ काफ़ी बेटर है एज़ कम्पेयर टू us here. So that is something that is definitely going to happen. Second, there are things like flossing. इंडिया में फ्लॉसिंग कोई करता ही नहीं है बिकॉज इट इज़ वेरी पेनफुल. वो फ्लॉस करने में ही एक एक दांत में बहुत टाइम लग जाता है. बट प्रोडक्ट्स लाइक वाटर फ्लॉसर जिससे 30 सेकेंड्स में ही पूरा टीथ का फ्लॉसिंग हो जाता है बहुत एफिशिएंटली. सो दीज आर दी प्रोडक्ट्स जो अडॉप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा इन कमिंग टाइम क्योंकि everyone wants to save time and do everything efficiently. तो ये सब products are gaining a lot of traction in US and Europe and we feel कि इंडिया में भी वो same trend आएगा. Got it. Got it. So Nikunj, starting a consumer company in India, right, comes with its own unique challenges. Yes. What were the biggest hurdles you faced in starting Tusk and getting it to this level where you are right now? Got it. So the biggest difficulty in a hardware consumer space in India is R&D. R&D पे कोई भी इन्वेस्ट करने को रेडी नहीं होता है एट द इनिशियल स्टेज एंड R&D में बहुत कैपिटल लगता है. इफ़ यू वांट टू डेवलप समथिंग न्यू तो बहुत कैपिटल और बहुत टाइम लगता है. इफ़ यू सी मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स इसलिए यही करते हैं जो पहले से बना हुआ है कहीं से जाके आउटसोर्स कर दिया उसको वाइट लेबल करके बेच देते हैं. दैट इज़ द ईजिएस्ट थिंग टू डू. बट इफ़ यू ट्रूली वांट टू इनोवेट एंड स्टैंड आउट, एक लॉन्ग टर्म डिफ्रेंसिएशन क्रिएट करना है तो यू विल हैव टू इनोवेट एंड डिज़ाइन फ्रॉम स्क्रैच. सो वो जब हम लोग कर रहे थे तो सबसे पहले वही प्रॉब्लम फेस कर रहे थे कि फंड्स कहाँ से आएंगे टू एक्चुअली एग्जीक्यूट दिस. इनिशियली हमारे पास जितने सेविंग्स थे वो लगा दिए, फिर उसके बाद स्टिल देर वॉज सम डेफिसिट दैट वी वांटेड, वो कहाँ से आएगा. सो दैट्स व्हेन गवर्नमेंट स्कीम्स लाइक निधि प्रयास, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड, ये सब ने हमको तब सपोर्ट किया इनिशियल स्टेजेस में फॉर द R&D, जिसके वजह से हम लोग वो डेवलप करके मैन्युफैक्चरिंग तक लेके आ पाए एंड नाउ इट इज़ इन द मार्केट. So that phase was the toughest, actually developing the products and बहुत time लग जाता है. So we took around 12 months to develop the product from the scratch. Now that we are here, इसके बाद अभी जो second, third, fourth product create करना है because one line is set is becomes much more easier. The turnaround time can be 2 to 3 months at max. But जो first product जो create करना था उसके लिए सबसे बड़ा ये resistance था for us. Got it. How do you manage competition with funded players while being, I would not say unfunded, non-funded startup, Yes. but you're still at a little younger stage, but there have been funded players, right? And legacy players like Colgate or Oral-B. How do you manage that? How do you give a fight to that competition? Yes, so legacy players जो है they have their own strengths and own weaknesses. उनका strength है offline distribution and supply chain and that's what they are really good at. and हम लोग अगर वो fight में जाएंगे तो we know we will lose for sure. So what we are trying to do is make a online presence and create a brand online first. आप US and Europe में भी देखोगे there are 10 to 12 new age brands जो last 5 to 6 years में आए and they have created massive brand awareness and अभी they have मतलब बहुत सारे तो acquire हो गए by the bigger players but there are few players who are going to IPO in next 2 to 3 years. So मतलब कि वो वाला जो play है where you do online first, create a very good brand, create a good story and वहाँ से online distribution first crack करो and then go into offline. That is the route that we are also following. एंड हमारे जो कंज्यूमर्स है जो अभी खुद के लिए खरीद रहे हैं वो ऑनलाइन ही शॉपिंग करते हैं. वो आइदर अमेज़ॉन से बाय करते हैं, वेबसाइट से,
या क्विक कॉमर्स से. एंड दीज आर दी लिवर्स दैट वी वांट टू ऑप्टिमाइज फॉर इन द लॉन्ग टर्म टू actually create a brand. Would you also say design is one of the factor in your, you know, where you stand out vis-a-vis some other players? Yes, so design is something that we treat as a hygiene. क्योंकि आप बाहर देखोगे मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स आर वेरी वेरी वेल डिज़ाइंड, बट इंडिया में उतना है नहीं एज ऑफ नाउ. बट येस, ये डिज़ाइन इज समथिंग दैट वी आर रियली रियली प्राउड ऑफ एंड वी बिलीव इन गुड डिज़ाइन. तो हम लोग उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं. बट ऑफकोर्स सिर्फ डिज़ाइन पे प्रोडक्ट्स नहीं बिकते हैं. इट हैज़ टू बी फंक्शनल, इट हैज़ टू बी एट द राइट प्राइस, एंड बाकी फीचर्स वगैरह भी एक सर्टन वैल्यू उनको लगना चाहिए. सो ब्रांड, ओवरऑल ब्रांड एज अ टस्क, वो उनको बिकना चाहिए, नॉट जस्ट a certain design or certain product. So what we are trying to create is a go-to oral care brand for the new age consumers like Gen Zs and millennials. So yeah. Got it. Very interesting. Very interesting. We'll come to the last section of it, which is the rapid fire. Yes. Right? What are some misconceptions or myths about oral care in India that you encounter frequently? मिसकंसेप्शंस ये है कि एक बार ब्रश करने से भी हो जाता है. पुराने ज़माने में देखो ब्रश भी नहीं था, फिर भी वो लोग के दांत सही रहते थे. सो दैट द डिफरेंस वॉज द टाइप ऑफ फूड दैट वी कंज्यूम इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम वॉट दे यूज टू कंज्यूम. तो मतलब 2 times ब्रशिंग इज़ मस्ट अकॉर्डिंग टू मी. या Okay. How do celebrities have such shining, attractive teeth? What do they do differently? देखो उनके वो असली दांत नहीं है. दैट इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू टेल यू. क्योंकि सब लोग स्माइल डिज़ाइन कराते हैं. सो उसमें क्या होता है कि पूरे जो तुम्हारे टीथ सेट्स है उस पर एक एडिशनल लेयर ऑफ टीथ लगा देते हैं विच इज़ पिक्चर परफेक्ट फॉर योर स्माइल. बट वैसा होता नहीं है. फॉर एग्जाम्पल सबको ये भी लगता है कि वाइट टीथ आर दी हेल्दी टीथ. वैसा नहीं है. अपने जो टीथ का कलर है इट इज़ नॉट completely white, it is थोड़ा सा pale yellowish. हाँ, pale yes. yellowish. and सबका अलग अलग है. मतलब फॉर एग्जांपल अफ्रीकन पर्सन, आप उनके लोगों के दांत देखोगे उनके बहुत वाइट है. उनके ज़्यादा white है. यस, इट इज़ लिंक टू योर बोन स्ट्रक्चर. तो मतलब तुम्हारे जैसे बोन्स है उससे वो कलर डिफाइन होता है. तो ऐसे लोगों को लगता है वाइट टीथ और परफेक्ट टीथ होने चाहिए सबके, बट दैट इज़ नॉट दी नेचुरल वे ऑफ एक्चुअली हाउ इट शुड बी. किसी का नेचुरल कलर ही कुछ पेल येलो हो सकता है. गॉट इट. दिस आंसर आई नो बट आई स्टिल आस्क, डू यू वांट टू बी एप्पल और सैमसंग ऑफ टूथब्रश? वी वांट टू बी एप्पल फॉर श्योर, नॉट सैमसंग. यस. व्हाई? आप हमारे ऑफिस में भी आए थे तो आपने देखा होगा वहाँ पे एक स्टीव जॉब्स का पोस्टर लगा हुआ है. सो वी आर वेरी इंस्पायर्ड बाय स्टीव जॉब्स एंड द वर्क दैट ही डिड. या सो मतलब उन्होंने प्रोडक्ट्स बनाए जो ऑफकोर्स फंक्शनल थे, बेटर थे, बट जैसे उन्होंने एक्सपीरियंस जो क्रिएट किए थ्रू द प्रोडक्ट्स, जिससे यूज़र मतलब बहुत ही अच्छे से यूज़ कर पा रहा है प्रोडक्ट्स, उनको मज़ा आ रहा है यूज़ करने में. दैट इज़ समथिंग वी वांट टू पुट इन टू दिस कैटेगरी एज वेल, विच इज़ वेरी वेरी बोरिंग. सो वहाँ से वो इंस्पिरेशन लेके हम लोग कैसे बेटर डिज़ाइन बना सकते हैं टू मेक इट मोर अपीलिंग फॉर देम इज़ वॉट वी आर ट्राइंग टू क्रैक. वंडरफुल. या थैंक यू निकुंज. आई थिंक बहुत मज़ा आया. दिस इज़ Yes. अ वेरी इंटरेस्टिंग कैटेगरी. आई एम पर्सनली ऑल्सो वेरी बुलिश ऑन दिस, एंड यू नो हैविंग सीन योर जर्नी एंड फ्रॉम वेयर यू ऑल हैव स्टार्टेड और आज जो लेवल पे पहुँचे हुए, आई थिंक देयर इज़ अ ह्यूज you know road ahead to build. This category is just starting, just opening up, and I feel that this is going to be like a game changer category and a game changer brand, Tusk. Thank you. Thanks a lot, Nikunj. थैंक बहुत मज़ा आया. Thank you. थैंक यू सो मच सर.